ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडे सेशन। आज बच्चों एक पूरा हम लोग P1 सॉल्व करने जा रहे हैं। अगेन इट्स अ स्पेसिमेन पेपर, तो इट्स अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। आप लोग के न्यू सिलेबस के ऊपर ये एक पेपर बना हुआ है, पेपर 1, कंसिस्टिंग ऑफ 75 मार्क्स, और वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस होल पेपर इन टुडेज सेशन एक्सेप्ट वन क्वेश्चन। एक सवाल बच्चों मैं आप लोगों को सॉल्व नहीं करवाऊंगा, दैट इज अबाउट दैट इज फ्रॉम द चैप्टर एआई। एआई अभी तक हम लोग ने नहीं कंप्लीट करा है, तो जब हम लोग एआई कंप्लीट कर लेंगे इन द कमिंग वीक, तो फिर हम वो उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। द इंस्ट्रक्शंस आर सेम। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है बच्चों, रिक्वेस्ट कर रहा है, बाइनरी इज अ नंबर सिस्टम यूज्ड बाय कंप्यूटर्स, 4 8 बिट वैल्यूज आर गिवन। वी नीड टू फाइंड आउट द बाइनरी फॉर 50। तो बच्चों जरा सिंपल सा मेथड है, 1 2 4 8 16 32, 64 and 128, 0 0, 32 plus 16, that is 40, 8, 48 plus 2, so that will be 50, remaining bits 0. So देख लें बच्चों ये पैटर्न कहां पर है। I guess this is the pattern that we have, B. आगे बता रहे बच्चों, you need to convert हेक्साडेसिमल वैल्यू 90 को आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। तो 9 अलग, 0 अलग, 1 2 4 8, 1 2 4 8. I need to make it 9, 8 plus 1, and 0 will be 0 0 0. So this is the value that we have. This will be C. We have few answers as well. Awab and Hadi ने हमें बता दिया भाई, thank you you people. Moving forward. अब अगले पार्ट में बोले बच्चों, एक्सप्लेन व्हाई कंप्यूटर सिस्टम कैन ओनली प्रोसेस बाइनरी डाटा इन बाइनरी फॉर्म। तो बच्चों बिकॉज कंप्यूटर CPU consist of transistors, and simply transistors होते क्या, they are logic gates. So they only work on two values, either on, that is 1, or off, that is 0. So that's why बच्चों कंप्यूटर ओनली यूजेस बाइनरी नंबर सिस्टम। और हम एक और बात ऐड ऑन कर देते हैं, 2 नंबर मिल रहे हैं वैसे तो इस बात के ऊपर भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन स्टिल यू कैन ऐड अनदर पॉइंट, दिस कैन बी zeros and ones represent different voltage levels. तो ये आपको डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स क्या करवाते हैं, रिप्रेजेंट करवाते हैं। सो दैट्स इट, दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन नंबर 1, एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर पार्ट बी। अच्छा अभी कंप्लीट नहीं हुआ भाई, पार्ट सी भी है इसका। पार्ट सी में बोल रहे बच्चों बाइनरी एडिशन परफॉर्म करना है। लेट्स परफॉर्म द एडिशन 0 plus 1, so this will be 1, 0 plus 1, this will be 1, 0 plus 0 0, 1 plus 1, तो बच्चों दैट इज 2। और आपको पता है 2 का बाइनरी क्या होता है, 0 and 1 इज बीइंग कैरीड। ठीक है, तो 0 इधर आया, 1 कैरी चला गया। अब ये 1 plus 1 अगेन क्या हो गया, 2, तो 0 हियर 1 कैरी, अगेन 1 plus 1 दैट इज 2, 0 हियर 1 कैरी, अगेन 1 plus 1 बच्चों दैट इज 2, 0 हियर 1 कैरी, and now 1 plus 0 that will be 1. So this is the final value बच्चों that we have. शो योर वर्किंग, तो बच्चों आप लोगों ने वर्किंग भी मतलब वो कैरी आपको शो करना, तो आपने वो भी रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। लेट्स फाइन। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। देयर आर 2 8-bit बाइनरी वैल्यूज एडेड। द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन नीड्स टू बी स्टोर्ड इन 8-bit रजिस्टर
The binary result of the calculation बच्चों is 301. This generates an error. State the name of this type of error and explain why this error occurs. तो बच्चों देखें, अगर हमारे पास the total number of bits are 8, अगर मैं 8 की 8 बिट 1 कर दूं, 1 1 1 1 1 1 1 1, द मैक्सिमम वैल्यू दैट आई कैन स्टोर इज 255. अब हमारे पास जो नंबर है दैट इज 301. तो ये 8 बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट आप इस नंबर को नहीं कर सकते, ठीक है ना. यू नीड मोर बिट्स. तो जब ऐसा होता है बच्चों, द एरर नेम इज कॉल्ड, क्या कहलाता था, ओवरफ्लो. एक्सप्लेनेशन बच्चों आप बता देंगे यहां पे. Number is large, that it cannot be represented in the given number of bits. ओके जी, ओवरफ्लो बता रहे हैं, हादी बता रहे हैं ओवरफ्लो, और हाशिर बता रहे हैं ओवरफ्लो. सो यस, दैट्स द रीजन दैट वी हैव. तो यहाँ पे हमारे पास ओवरफ्लो हो जाता है, और ओवरफ्लो के बाद हमारे पास नंबर इतना बड़ा हो जाता है बच्चों, तो दैट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बिट्स आर नॉट इनफ. मैक्सिमम वैल्यू ये भी बता दें, मैक्सिमम वैल्यू दैट we can store using 8 bits is 255. ठीक है भाई, पार्ट डी वी आर डन. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है. लेट्स जंप टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है भाई हमारे पास 3 बाइनरी रजिस्टर्स हैं, एंड द आउटकम्स आफ्टर द ट्रांसमिशन इज नो एरर्स हैव बीन डिटेक्टेड. अच्छा, इवन पैरिटी बच्चों इज बीइंग अप्लाइड. इवन पैरिटी का मतलब है नंबर ऑफ वंस शुड बी इवन. रजिस्टर ए में और रजिस्टर सी में कोई एरर नहीं आया. एन एरर हैज बीन डिटेक्टेड इन रजिस्टर बी. तो आपको बच्चों ऐसी ही वैल्यूज यहाँ पे प्लेस करनी है कि एरर आपके पास ना हो. तो ए में एरर नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ वंस आपके पास इवन होनी चाहिए, 1 2 3. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इट शुड बी 1, सो दैट आपके पास अब एरर नहीं आएगा. एंड सी बच्चों चेक कर लें, 1 2 3, अगेन this will be set to 1. अब बी के बारे में बोल रहे बच्चों, बी के अंदर बता रहे एरर हैज बीन डिटेक्टेड. तो आपको नंबर ऑफ वंस क्या करने, यहाँ पे ऑड करने, 1 2, सो 3 इज एन ऑड नंबर. तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, एरर विल बी डिटेक्टेड. एंड आई गेस वी आर डन. ठीक है, ऐसे आसान सवाल भी आ जाते हैं भाई. सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3. A student बच्चों is using laptop and a calculator for homework. Laptop has a central processing unit, perform fetch, decode, execute cycle. A CPU has several components including MDR and ALU. Describe how MDR and ALU are used in fetch, decode, execute cycle. तो बच्चों यहाँ पे आप लोग को देखिए, मोस्ट लाइकली आप लोग को पूरी फैच एग्जीक्यूट साइकिल आप लोग को एक्सप्लेन नहीं करनी. यू जस्ट नीड टू एक्सप्लेन. आप बीच में से सारी चीजें स्किप करें और आप लोग यहाँ पे ये एक्सप्लेन करें द रोल ऑफ एमडीआर. तो आपको पता है, अब ऑफ कोर्स डेटा बच्चों पहले फैच होता है आपके पास और उसका एड्रेस आता है एमएआर के अंदर, देन पीसी के अंदर आता है, देन एमएआर के अंदर आता है, फिर एमएआर से एमडीआर के पास वो डेटा मूव करते हैं. तो हम लोग डायरेक्ट एमडीआर की बात करेंगे. ठीक है, तो जो भी उसने अब यहाँ पे आपको रेलिवेंट आपको फिक्स कर दिया है, तो वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट द रेलिवेंट स्टफ. ठीक है, सारी बातें नहीं करेंगे. तो मैंने यहाँ पे बता दिया बच्चों, डेटा is fetched from RAM into MDR.
MDR stores the data that is to be executed. Data from MDR is moved to another register where it is executed with the help of ALU. All logical operations are carried by ALU. ALU also having a register called accumulator where results generated are stored. ठीक है ना। तो बच्चों मैंने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। इनडायरेक्टली मैंने यहाँ पे एमडीआर को भी एक्सप्लेन कर दिया, डाटा एमडीआर से कहां जा रहा है मैंने वो भी बता दिया, एएलयू किस तरह हेल्प कर रहा है एएलयू को मैंने डिफाइन भी कर दिया और उसकी वर्किंग भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करवा दी। ठीक है, और भी हम लोग कुछ फर्दर पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन दिस इज मोर देन फाइन फॉर 5 मार्क्स। ओके, वी हैव 2 क्वेश्चन फॉर दिस, लेट मी चेक क्या सवाल है भाई। हाँ दानियल बेटा प्लीज, अगर आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको 5 के 5 पॉइंट्स याद हैं तो गो विद द पॉइंट्स, आप एग्जाम में पॉइंट्स में आंसर कर सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल। नहीं हाशिर सीआईआर की बात नहीं करेंगे ना, अगर उसको सीआईआर की बात करवानी होती वो बोलता फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल एक्सप्लेन करो, ठीक है ना। उसने नहीं बोला आपको, उसने बोला एमडीआर और एएलयू की बात करना, फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल करना, मुझे किसी और की बात नहीं करनी। मैंने एक्यूमुलेटर का भी नाम लिख दिया, नहीं लिखना चाहिए था, सिर्फ लिख दिया रजिस्टर में टेम्पररी स्टोर हो जाता है, और खैर लिख दिया तो लिख दिया, लेकिन आप किसी और की अब बात नहीं करोगे, वो जो बोल रहा है वही करो, डोंट मतलब इररेलेवेंट बातें ज्यादा नहीं करें, ज्यादा बेहतर है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, वो बोले बच्चों डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय एम्बेडेड सिस्टम्स। आपको पता है बच्चों, सिस्टम्स दैट आर डिजाइन्ड टू परफॉर्म specific task. They are having single purpose and softwares बच्चों in embedded systems is called firmware. ठीक है, तो मैंने अच्छा खासा एक्सप्लेन कर दिया। वो बोले बच्चों लैपटॉप के अंदर भी बोल रहा है एंड कैलकुलेटर्स में दोनों में रोम होती है। स्टेट वन रीजन बाय बोथ डिवाइसेस हैव रोम, बिकॉज रोम में होता क्या है, स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सो दे बोथ नीड
boot up instructions to be stored permanently. ठीक है भाई. We have 3 questions. Let me check. क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया वैसे. सो ओके जी. हादी बता रहे स्पेसिफिक टास्क. ठीक है. वो एम्बेडेड सिस्टम के बारे में बता रहे होंगे. सर कैन बी से दैट एम्बेडेड सिस्टम्स कैन बी फाउंड इन कैलकुलेटर्स. अच्छा वो बोले डिफाइन डिस्क्राइब एम्बेडेड सिस्टम्स. तो मतलब आप कैलकुलेटर की बात हमारे यहाँ पे नहीं करोगे. मतलब कैलकुलेटर के अंदर होते हैं मतलब 2 नंबर का सवाल है. अगर वो ये बोलता है कि भाई कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं एम्बेडेड सिस्टम्स, देन यू कैन राइट कि भाई कैलकुलेटर में यूज हो सकते हैं. आपके पास फेस डिटेक्टर के अंदर यूज हो सकते हैं. आप लोग कार्ड रीडर के अंदर यूज कर सकते हैं. तो आप फिर एग्जांपल्स के अंदर बता सकते हो. लेकिन अगर नहीं है तो मतलब इरेलीवेंट. अगेन वही वाली बात कि ज्यादा इरेलीवेंट चीजें लिखनी नहीं होती, हमें टू द पॉइंट आंसर्स करने होते हैं. अच्छा मैं ये भी बोल सकता था आप लोगों को कि भाई ये सब मैंने क्लास में लिखवाया हुआ, आप लोग को नोट से देख लें. लेकिन मैं खुद आंसर लिख रहा हूं ताकि आप लोग को पता हो कि एग्जाम में लिखना क्या है, आप लोग का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए आंसर्स का. ठीक है. तो मैं बिल्कुल एक बेहतरीन स्ट्रक्चर भी यहाँ पे क्रिएट करके आप लोग को बता रहा हूँ कि हाउ टू आंसर इन द एग्जाम्स मूविंग फॉरवर्ड. A student is concerned बच्चों about the threats to their computer when using internet. A student wants some security solutions to protect from the threats. Identify the security solution that could be used to protect the computer virus from hacking. Multiple बातें कर रहा है. Each security solution must be different. ठीक है भाई, सबको यूनिक बताना है. कंप्यूटर वायरस तो बच्चों एंटीवायरस. हैकिंग, हैकिंग के लिए मेरे ख्याल से देखो बहुत सारे मेथड्स हैं. आई विल बी गोइंग बच्चों विथ फायरवॉल. स्पाईवेयर, अब एंटीवायरस हो गया बच्चों, फायरवॉल हो गया, तो आई कैन गो विद एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर एज वेल. ठीक है. तो आई कैन गो विद दैट. आई कैन गो विद एनक्रिप्शन एज वेल. बिल्कुल आई कैन गो विद दैट. सो एंटी स्पाईवेयर ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे. चले कुछ और डिफरेंट करते हैं. 2 स्टेप चले सिंपल रखें. 2 स्टेप वेरिफिकेशन, वो स्पाईवेयर फिर भी आके बैठ जाएगा. खैर वी कैन अप्लाई 2 स्टेप वेरिफिकेशन एज वेल. सो वी आर गोइंग विद एंटी malware और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर्स. अच्छा जी, वो बोले बच्चों डिस्क्राइब ईच ऑफ द सिक्योरिटी सोल्यूशन. आपने जो ऊपर आइडेंटिफाई करा है उसको डिस्क्राइब भी कर दो. तो बच्चों वायरस को, एंटीवायरस को डिस्क्राइब कर दें. एंटीवायरस क्या क्या काम करता है आपके पास? स्कैन, कंप्यूटर सिस्टम, रिकॉर्ड ऑफ नोन वायरसेस is checked in each file. एक एक फाइल के अंदर आप जो रिकॉर्ड, जो नोन वायरसेस होते हैं उनको चेक करते हैं आप. अगर कोई वायरस मिल जाए बच्चों, इफ फाउंड रिमूव्स द infected file. Check files
and softwares before download as well. ठीक है भाई, हैकिंग के लिए मैंने बताया था बच्चों फायरवॉल, तो फायरवॉल के बारे में बता दें कुछ बातें. मॉनिटर्स, इनकमिंग and outgoing traffic, filtration of IP addresses can be applied check for any malicious code or file. फर्दर बच्चों, हाँ अब आप बेटा, आई विल बी अपलोडिंग दोस, मैं अपलोड कर दूंगा सारे. अच्छा जी, नाउ द स्पाईवेयर एंटी, अगर हम लोग यहाँ पे एंटी मेलवेयर या एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर कर दें यहाँ पे, तो बच्चों उनका भी काम यही है. एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर जो आपका पूरा एंटीवायरस वाला काम है, वही वाला काम करते हैं ये भी. स्कैन computer for spywares, remove if found, and can also prevent from downloading the affected files. ठीक है, तो बच्चों दैट वाज द क्वेश्चन. एक सिक्योरिटी का क्वेश्चन आया हुआ था हमारे पास, दैट वी परफॉर्म. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर देखते हैं जरा आप यहाँ पे. कंप्लीट द स्टेटमेंट्स अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. यूज द टर्म्स फ्रॉम द लिस्ट. Each term in the list will not be used. You should only use each term once. Structure of a language statements. एक स्ट्रक्चर को बच्चों आप लोग क्या कहते हैं? We call it as syntax. कोई भी लैंग्वेज का कोई स्ट्रक्चर है आपके पास, तो दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेस नेचुरल लैंग्वेज. नेचुरल लैंग्वेज बच्चों दैट आई एम स्पीकिंग करेंटली इंग्लिश लैंग्वेज. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेस नेचुरल लैंग्वेज स्टेटमेंट इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज. 2 वर्ड हो गए भाई, टिक करते रहेगा एग्जाम में भी. हाई लेवल. When programs are written in this type of language, they need a dash to convert. They need a translator होना चाहिए. ट्रांसलेटर कहीं है हमारे पास? ट्रांसलेटर. Yes, we have. So they need a translator to convert them into machine code. Machine language में machine code. To convert them into machine code. लो लेवल नहीं लिख देगा. लो लेवल में कन्वर्ट नहीं करते, मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं. द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज रिटन यूजिंग द निमोनिक्स. निमोनिक्स बच्चों हम लोग यूज करते हैं इन असेंबली लैंग्वेज. निमोनिक्स हम लोग यूज करते हैं इन असेंबली लैंग्वेज. तो हियर यू गो. assembly language. This is an example of
असेंबली लैंग्वेज बच्चों किस चीज की एग्जाम्पल है? लो लेवल की एग्जाम्पल है आपके पास। तो असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल लैंग्वेज एंड आई थिंक वी आर डन। सर सेम आंसर के वजह से तो मार्क्स नहीं कटेंगे, नहीं नहीं। पार्ट 4B। ओके, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड वी हैव अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बेहतर लग रहा है मुझे सर, असेंबली लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेजेस में क्या फर्क है? अच्छा जी, तो असेंबली लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में उस सैम मैं आपको अगर फर्क बताऊं तो लो लेवल लैंग्वेज आईफोन है, ठीक है, और 14 प्रो मैक्स क्या है? असेंबली लैंग्वेज है। तो भाई आईफोन क्या है? आईफोन एक जनरल टर्म है, लो लेवल लैंग्वेज एक आपका जनरल टर्म है, उसकी लो लेवल लैंग्वेज के अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं। तो वन ऑफ द लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज क्या है आपके पास? इट्स अ टाइप ऑफ अ लो लेवल लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। ठीक है भाई, आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। सर ये P2 की थ्योरी का लेक्चर नहीं है? अच्छा अच्छा ठीक है, हाशिर, आई विल सी दैट। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे अब ये बता रहे हैं, अ प्रोग्रामर ऑफन यूजेस integrated development environment when writing computer programs, three common functions of IDEs। integrated development environment बच्चों जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर आप लोग कोडिंग करते हैं उसके कोई भी 3 फीचर्स बता दें। देयर आर मल्टीपल फीचर्स, मैंने क्लास में लिखवाए मैं आप लोग को। सो वन ऑफ देम इज कोड एडिटर, another one बच्चों is प्रीटी प्रिंटिंग, आई टॉक अबाउट दैट, खुद ब खुद जो कलर चेंज हो जाता है आपके पास। another one बच्चों कैन बी आपके पास, दे आर हैविंग ट्रांसलेटर्स, कंपाइलर या इंटरप्रेटर होता है उसके अंदर, ट्रांसलेटर्स, दे आर हैविंग बच्चों डीबगर्स, दे आर हैविंग अ ब्रेक पॉइंट। तो बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, यू कैन जस्ट राइट एनी 3, क्लास में आपको पास लिखे हुए होंगे। हमजा कलर चेंज नहीं लिखना बेटा, प्रीटी प्रिंट लिखना, ठीक है, प्रीटी प्रिंटिंग लिखना। एंड दिस कंप्लीट्स बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास यहाँ पे, दैट वाज अबाउट द ट्रांसलेटर्स। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर मूव करते हैं। डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय बच्चों क्लाउड स्टोरेज, डाटा स्टोरेज using several remote servers, data from those servers, can be accessed using internet. Servers are well secure and protected नहीं and managed by third party। ठीक है भाई, तो एक बेहतरीन रिप्लाई कर दिया हमने एग्जामिनर को यहाँ पे। बता रहे बच्चों प्राइमरी स्टोरेज इज रोम, गिव वन अदर एग्जांपल ऑफ प्राइमरी स्टोरेज। ऑफ कोर्स अगर ये रोम लिख रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? रैम। टू एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, तो वी कैन गो विद बच्चों SSD, पूरा नाम ही लिख दें बच्चों, सॉलिड स्टेट ड्राइव। एंड अनदर वन बच्चों कैन बी HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो आई थिंक वी आर डन। लास्ट पार्ट है बच्चों, 4 मार्क्स अवार्ड कर रहे हैं। बोले बच्चों डिस्क्राइब हाउ वर्चुअल मेमोरी इज क्रिएटेड एंड यूज्ड। तो बच्चों बता देते हैं हम लोग, कोई मसला नहीं है। वर्चुअल मेमोरी इज क्रिएटेड using a portion of हार्ड डिस्क। आप लोग हार्ड डिस्क का बच्चों एक पोर्शन यूज करते हैं,
and we call that portion called swap memory. When RAM is full, when RAM is full, pages that are not currently used by CPU are moved in that swap memory. When CPU required any of those pages, they are moved from hard drive back into RAM and then used by CPU. So I think बच्चों बेहतरीन reply to the examiner for 4 marks. So describe how virtual memory is created and used. हमने बता दिया क्रिएट होती है बच्चों हार्ड ड्राइव में हम एक पोर्शन अलॉट कर देते हैं और वो पोर्शन कहलाता है आपके पास स्वैप मेमोरी। जब आपके पास रैम फुल होती है तो जो पेज करंटली यूज नहीं होता हम लोग क्या करते हैं स्वैप मेमोरी में मूव करवा देते हैं। जब उस पेज की रिक्वायरमेंट होती है हम लोग वापस से उस मेमोरी को उठाते हैं और हम लोग बच्चों हार्ड डिस्क से हार्ड ड्राइव से उठा के वापस से रैम में लोड करवा के सीपीयू के पास मूव ऑन करवा देते हैं। सो वी हैव फ्यू क्वेश्चंस, लेट मी चेक दोस क्वेश्चंस। कोई अच्छा सा सवाल है कोई? अच्छा जी सर, प्रिटी प्रिंटिंग, इट्स PRE, प्रिटी, PPRE होता है, ठीक है। मैं एक दफा वो भी कर लेता हूं भाई। PRE, हाँ सही सही लिखवाया है। क्या नाम है तुम्हारा? हादी। प्रीटी प्रिंटिंग ही होता है, जो मैंने लिखवाया आपको वही होता है बेटा, ठीक है। अच्छा अनदर क्वेश्चन, अब्दुल्ला कैन बी सर SSD। हाँ अब्दुल्ला, SSD में वैसे जनरली हमें हो सकता है, SSD भी हो सकता है। हम लोग मतलब इट्स नॉट कंपलसरी कि हमारे पास हार्ड डिस्क को, SSD में भी हम लोग कर सकते हैं काम। तो आप यू कैन यूज द वर्ड सेकेंडरी स्टोरेज, आप यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ हार्ड डिस्क, ठीक है। यू कैन यूज दैट इंस्टेड ऑफ हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज, ताकि SSD भी कवर हो जाए, ठीक है। वी कैन गो विद दैट, ठीक है, वी कैन गो विद दैट। वैसे जनरली हम लोग हार्ड डिस्क ही यूज कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे वो भी लिख दें, अगर सेकेंडरी स्टोरेज लिख दें तो दैट्स टोटली फाइन, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। यू कैन यूज द वर्ड स्वैप मेमोरी। अब वो हार्ड डिस्क में भी हो सकती है और SSD के अंदर भी हो सकती है। तो वी आर डन बच्चों विद दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। कितने हैं भाई? टोटल क्वेश्चंस आर 11, 11 क्वेश्चंस है हमारे पास। ओके जी, नेक्स्ट, in a computer system, operating system runs directly on a firmware. Identify which type of software runs directly on the operating system. Identify which type of softwares run ओके okay. अच्छा जी, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, एक दानियाल ने सवाल किया थोड़ा सा अजीब सा है। सर वर्चुअल मेमोरी जब बनती है तो जब हमारे पास रैम कम पड़ गई हो। नहीं दानियाल, इट्स नॉट ट्रू। आप वर्चुअल मेमोरी पहले से आपको क्रिएट करके रखनी पड़ती है। ये नहीं होगा कि ऑन स्पॉट, हाँ यूज जब होगी जब रैम फुल हो, बना के आपको पहले से ऑप्शन देना पड़ेगा, ठीक है। पहले से बना के आप उसको रखते हो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, वो बोल रहा है कि कौन से सॉफ्टवेयर आपके पास डायरेक्टली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चला देता है। तो बच्चों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफ कोर्स,
आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलते हैं. One of the function of operating system is to manage interrupts. Give two examples when an interrupt would be generated. बच्चों मैंने आप लोगों को पूरी लिस्ट लिखवाई थी क्लास के अंदर कि इंटरप्ट कब कब जनरेट हो सकता है, तो वो बता देते हैं. कोई हार्डवेयर फेलियर हो जाए बच्चों, आपके पास आप डिवाइड बाय जीरो कर दें, कोई यूजर इनपुट रिक्वायर्ड हो, कोई सॉफ्टवेयर फेल हो जाए आपके पास, ठीक है, सो एनी वैलिड रीजन विल बी अवॉर्डेड. आपको कोई भी, आपको पूरी लिस्ट लिखवाई भी है, कोई भी 2 पॉइंट्स आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. प्रिंटर रन, हार्डवेयर फेलियर के अंदर आ जाएगा हमारे पास वो, ठीक है. यू कैन राइट एनी. पेपर जैम, अच्छा बहुत स्पेसिफिक हो गया आप, ठीक है, यू कैन राइट दैट एज वेल. आगे बता रहे बच्चों के स्टेट व्हाट इज मेंट बाय डिजिटल करेंसी. करेंसी दैट इज बच्चों इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. करेंसी दैट is in electronic form. So a currency that is in electronic form बच्चों, that is the digital currency. I think that's it. और मतलब क्या बताऊं मैं इसके बारे में. Describe the process of blockchain in digital currency. बच्चों ब्लॉकचेन का आपको पता है, हम लोगों ने पूरा एक डिटेल्ड लेक्चर कवर अप करा था. तो ब्लॉकचेन इज एक्चुअली, ये आपके पास इट्स, मैं चीटिंग कर लूं थोड़ी सी, मैंने बड़ा अच्छा लिख पाया था, मुझे याद आ रहा है कुछ. ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन, लेट मी चेक द क्लास लेक्चर्स. It was in the chapter that is called security. Here you go. बहुत बड़ा लिखवाया हुआ है मैंने तो, इसको शॉर्ट डाउन करके लिखना पड़ेगा बच्चों, थोड़ा सा शॉर्ट डाउन करके लिखना पड़ेगा, इससे हम लोग यहाँ पे. हाँ देखो ये सही है. कंप्यूटर्स व्हेन अ न्यू ट्रांजेक्शन. सो आई थिंक, हाँ ये वाली बातें अच्छी है. चलो मैं लिख ही देता हूँ, खुद ही लिख देता हूँ भाई. इसको थोड़ा बेहतर करके हम लोग वर्डिंग की फॉर्म में क्या करते हैं, लिखते हैं जरा. पास्ट पेपर्स सेशन. ओके जी. सो इट्स 2 नंबर का लेकिन सवाल है सिर्फ, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है. इट्स लाइक अ सेंट्रलाइज्ड database having all transactions records managed. Every time a transaction takes place, a new block
is created and time of that transaction is also recorded. Every system is informed, so it cannot be altered. ऑल्ट्रेशन भी आप लोग क्या कर सकते हैं, उसके अंदर नहीं कर सकते. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता हमजा बेटा. सिस्टम सॉफ्टवेयर भी वन टाइप ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर लिख सकते हो तुम हाशिर, बट नॉट सिस्टम सॉफ्टवेयर. ऊपर अगर तुम यहाँ पे बात कर रहे हो तो इट कैन बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बट सिस्टम सॉफ्टवेयर तो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद है. सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम खुद है. तो एक बड़ी सिंपल सा बोले ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से सॉफ्टवेयर को रन कर सकता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को भी रन करता है. लेकिन सबसे बेहतरीन आंसर क्या है कि भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिपेंडेंट, मतलब वो डिपेंडेंट होते हैं आपके पास ऑल द टाइम ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके जी बच्चों, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बच्चों क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 आपको बता रहे द फॉलोइंग डाटा इज स्टोर्ड इन अ टेक्स्ट फाइल और रेड ग्रीन येलो, green, purple, blue, red, purple, blue, yellow, gray, black, pink, red. Explain how lossless compression would compress this file. So let me explain बच्चों. Repeated words are identified or repeated patterns are identified. आइडेंटिफाई करने के बाद बच्चों index is stored in a table and code smaller, of course, is assigned. They are replaced with smaller code और उनका जो बच्चों आपके पास इंडेक्स होता है रिपीटिशन is stored in a table. When file is decompressed
codes are replaced with original data and placed at their positions. Further, बच्चों, you can talk about no data is lost during decompression. ठीक है भाई, तो आप लोग हर वर्ड को बच्चों क्या करेंगे, लाइक रेड को अपना साइन कर दिया कोड 1। अब जहां जहां रेड है आपके पास वहां पे क्या हो गया, आपके पास वहां पे 1 आ गया। अब आप इनके इंडेक्सेस भी नोट कर लेते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब आप टेबल में क्या करेंगे, नोट करेंगे 1, और कहां कहां आया है वो 1, इनके इंडेक्सेस क्या है 7 एंड 14। तो अब आपने क्या करा, इससे रिप्लेस कर दिया। तो अब रेड के लिए आपको कितनी बाइट्स चाहिए थी, 3 बाइट्स चाहिए थी। अब 1 के लिए कितनी बाइट्स चाहिए, सिर्फ 1 बाइट चाहिए। ठीक है, आपने इसी सिमिलरली आपने इसको कोड असाइन कर दिया, लेट से ए, ग्रीन को ए कोड असाइन कर दिया। तो अब ग्रीन कहां कहां हो रहा है बच्चों, कोड इज ए, तो ये आ रहा है आपका 2 4, तो 2 जगह आ रहा है आपके पास, एंड सो ऑन। दिस इज हाउ बच्चों वी कैन अप्लाई द compression technique on a text file. Yes, you can write. Okay जी, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों अभी आप लोग हम लोग स्किप करेंगे, बिकॉज अभी हम लोगों ने एआई और रोबोटिक्स नहीं पढ़ा है। जब वो पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग बात करेंगे कि भाई इंटेलिजेंस सिस्टम क्या होते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम्स क्या होते हैं, उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ऑल अबाउट दैट, मशीन लर्निंग क्या होती है। तो जब बात करेंगे इसके ऊपर, इस वीक इंशाल्लाह हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। द लास्ट क्वेश्चन बच्चों इज ऑन द माइक्रो प्रोसेसर। मैंने आप लोग को बताया था भाई माइक्रो प्रोसेसर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप लोग को सेम पैटर्न यूज करना है, सेम स्ट्रक्चर आप लोग को यूज करना है एवरी टाइम। तो देखते हैं जरा। ऑफिस हैज एन ऑटोमेटेड लाइटनिंग सिस्टम व्हेन मूवमेंट इज डिटेक्टेड, when movement is detected in the office the lights are switched on। तो मूवमेंट बच्चों आप लोग को डिटेक्ट करनी है, तो आई विल बी गोइंग विद इंफ्रारेड सेंसर आई गेस। तो इंफ्रारेड सेंसर हमारे पास क्या नोट करता है, हमारी मूवमेंट को क्या करता है, नोट कर रहा होता है। तो इंफ्रारेड सेंसर कैन बी यूज्ड। ठीक है, if movement is not detected for the period of 2 minutes the lights are switched off। describe what is meant by a microprocessor। so microprocessor बच्चों क्या होता है आपके पास, it is a type of integrated circuit। एक आईसी होती है बच्चों, और all processing is performed by this IC consists of a single
शेप। ठीक है ना, तो हमने बता दिया बच्चों, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर आपके पास एक इट्स अ टाइप ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, और सारी प्रोसेसिंग ये परफॉर्म कर रहा होता है आपके पास, एंड सो ऑन। एंड बच्चों अब ये 6 नंबर का सवाल है, मैंने आप लोगों को बताया था भाई 6 नंबर का सवाल आता है। सेंसर आप लोगों ने सही डिटेक्ट कर लिया है। वो बोले बच्चों पूरा बता दो, डिस्क्राइब हाउ द सेंसर एंड द माइक्रो प्रोसेसर आर यूज्ड इन दिस ऑटोमेटेड लाइटनिंग सिस्टम। तो लेट्स स्टार्ट। इसको हम लोग पूरा प्रॉपर फॉर्म में क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। बिफोर दैट वी हैव फ्यू क्वेश्चंस, लेट मी आंसर दोस क्वेश्चंस। We can write motion, yes we can go with that motion sensor as well. आप मोशन सेंसर के साथ भी जा सकते हो, वो एक्चुअली कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन अब आपके पास एग्जाम में ना थोड़ा सा स्पेसिफिक हो रहा है बहुत ज्यादा आजकल, तो ज्यादा बेहतर है कि इंफ्रारेड ही लिखें, लेकिन मोशन सेंसर भी चलता है, मतलब यू कैन राइट। ठीक है ना। ओके जी, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, इसको पूरा प्रॉपर फॉर्म में हमें बताना है भाई। हाउ सेंसर एंड द माइक्रोप्रोसेसर इन ऑटोमेटेड लाइटनिंग सिस्टम। values are sensed by infrared sensor and it generates a value. That value is converted into digital by analog to digital converter. Digital value is provided to microprocessor where it compares the value with a preset value. If value is in range, the same task is repeated. If value is outside the range, microprocessor sends a signal to an actuator, या फिजिकल काम परफॉर्म हो रहा है, sends a signal to an actuator to turn on या फिर off
the lights. Timer will be set to 0 after turning lights on and same checks will be repeated after 2 minutes. Process will be repeated continuously. ठीक है भाई, तो एक बेहतरीन रिप्लाई हमने बच्चों यहाँ पे एग्जामिनर को दिया है कि आप देखिए वो सेम है, बस इंफ्रारेड सेंसर आपने यहाँ पे बता दिया और आपके पास वही सारी चीजें हमने क्या करा है यहाँ पे पूरा बता दिया, लेकिन इट्स अ कंट्रोलिंग सिस्टम बिकॉज आप लोग यहाँ पे लाइट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब, इंटीग्रेटेड सर्किट इट्स लाइक एक आईसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेट, मतलब मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर बीइंग एम्बेड। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो एक माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। आईसीस क्या होती है, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स के ऊपर एक क्रिएट की जाती है। और ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, सिंपल वर्ड्स के अंदर दे आर लॉजिक गेट्स। ठीक है अब्दुल्ला, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। हाँ ऑफ कोर्स अयान, आई विल। बासिम मैंने यूज तो किया, व्हाई डिडंट यू यूज एडीसी? मैंने लिखा तो है डिजिटल बाय एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये लिखा हुआ है मैंने, आई हैव यूज्ड। ठीक है बासिम, यूज होगा ऑफ कोर्स, क्यों नहीं होगा। व्हाट इज द टाइमर पॉइंट? टाइमर पॉइंट मैंने ये बताया, देखो यहाँ पे एक चीज मेंशन थी ना कि क्वेश्चन में देखो एक दफा लाइट ऑन हो गई ना, तो इफ मूवमेंट इज नॉट डिटेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 minutes द लाइट्स आर स्विच्ड ऑफ। तो यहां पे मैंने बता दिया एक दफा लाइट ऑन हो गई, उसके बाद फिर वो क्या करेगा, टाइमर को सेट कर देगा 0, फिर 2 मिनट तक वेट करेगा वो। 2 मिनट वेट करने के बाद फिर वापस से चेक करेगा कि उसको ऑफ करना है या ऑन करना है। नहीं 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 भासिम जी, इट्स नॉट कंपलसरी टू यूज शॉर्ट फॉर्म्स। वो तो एग्जामिनर खुश होता है अगर लॉन्ग फॉर्म में आंसर करते हैं। तो बच्चों दैट वाज इट। अब्दुल्ला मैं आप इमेज की रिकॉर्डिंग बिल्कुल ढूंढ लूंगा आज और आपको सेंड करूंगा। तो बच्चों इसको यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे और एक नए पेपर के साथ आएंगे। अब हम लोग देखिए इस तरह पास पेपर्स करते जा रहे हैं, मैंने P1 भी करवाया आप लोग को, अब P2 के ऊपर भी बहुत सारा हमें मेहनत करनी है। P2 के भी इस तरह मैं आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ऑफ कोर्स हमारे पास सिर्फ 2 ही वेरिएंट थे, मैंने दोनों करवा दिया आप लोग को, लेकिन अब मैं खुद अपने वेरिएंट्स क्लियर करवा करवा के आप लोग को प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आप लोग बिल्कुल प्रो हो जाए पेपर 2 के अंदर भी। एंड ऑफ कोर्स इन आप लोगों को प्रो किसके अंदर करना है, इन 15 मार्क्स क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, तो आज इसको यही होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।